Okay, beta, welcome back. Shall we resume? Yes. Yes, sir. Yes. Right. Okay, beta. Okay. The recording of the meeting is on now. So let's continue. We discussed about great circle, small circle. So now we will continue further. Let me open up the presentation. That great circle sailing gives us the shortest distance between any 2 points on the surface of Earth. अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो तो ग्रेट सर्कल मेथड ही आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा. Now obviously as a navigator we are interested in taking our ship from position A to position B, and that too by using the shortest distance possible in the earliest time. Okay, because after all it's a financial venture. If you want to reach to a destination, so making financial sense, you should be following the shortest path. So that is the importance of great circle sailing. Why do we use it? Because it gives us the shortest path or shortest distance between any 2 points on the surface of. Now, the next definition which we need to be clear is, what is a spherical triangle? Now, we are aware what is a great circle. We know what is a small circle. Now, if you have a triangle on the surface of a sphere, all three sides of which, it's a triangle, so obviously it will have three sides. So all three sides of which are part of great circle. अगर ऐसी कोई ट्रायंगल हमारे स्फीयर के सरफेस पे बने, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की हम बात करें, तो अर्थ के ऊपर अगर कोई ऐसी ट्रायंगल बने जिसकी तीनों साइड्स ग्रेट सर्कल्स हों और दे आर पार्ट्स ऑफ द ग्रेट सर्कल, तो ऐसी ट्रायंगल को हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल बोलते हैं. लाइक you see these two positions here on the surface of Earth, position A and position B. अगर मैं इन दोनों को एक ग्रेट सर्कल ट्रैक से ज्वाइन कर देता हूँ, लेट्स से ये जो रेड कलर का ट्रैक है, इट इज द ग्रेट सर्कल ट्रैक बिटवीन देम, जीसी ट्रैक. एंड यू सी ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया है, दिस इज बेसिकली पासिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, साउथ पोल and this particular position. Can you tell me what is this great circle, beta? P, A, P dash? Meridian, sir. Very good, beta. That's the meridian. Meridian. Very good. It is the meridian of position A. And similarly, if I draw a circle from P to Bravo to P dash, it will be the meridian or longitude of B. So all the meridians are great circles. जो A to B हमने ट्रैक बनाया है वो PGC ट्रैक है. So this triangle which you see here on the diagram, PAB, Papa Alpha Bravo triangle, is a spherical triangle. So that's the next concept. This is a spherical triangle. Okay, so beta, up to here, everybody is okay? Yes, sir. Yes. Okay, बेटा कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, you can ask me. Okay, very good. So let me be face to face with you. Okay. So बेटा अभी हमने देखा
What is the concept of a great circle? हमने देखा what is a small circle, and तीसरी चीज जो हमने अभी देखी what is a spherical triangle. हमने एक एग्जाम्पल भी अभी देखा पी ए बी ट्राइंगल का विच वी मेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. पी इज द पोल, ए एंड बी आर अवर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. हमने इन दोनों को ग्रेट सर्कल ट्रैक से ज्वाइन किया एंड वी सॉ दिस पी ए बी ट्राइंगल इज ए स्फेरिकल ट्राइंगल. सो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल सर्कल, ग्रेट सर्कल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल, कोई भी डाउट आपको इनमें अगर आ रहा है यू कैन प्लीज शेयर विद मी. बेटा डाउट पूछने में घबराना नहीं. अगर आप बिल्कुल सिली डाउट भी पूछोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ओके, अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपके माइंड में बात क्लियर नहीं होगी. सो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी डाउट विच कम्स टू योर माइंड. सर एक बार स्फेरिकल ट्रायंगल की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. ओके, a spherical triangle is a triangle on the surface of a sphere, all three sides of which are parts of great circles. ओके सर, थैंक यू. Okay, beta, understood now? Okay. और कोई डाउट बेटा किसी को आ रहा है अभी तक? ओके, वेरी गुड. सो हर एक टॉपिक बेटा जो मैं आपके साथ कवर करूंगा, इन बिटवीन एंड आफ्टर दैट टॉपिक आई विल बी आस्किंग यू फॉर डाउट्स. सो जो भी डाउट्स आपके माइंड में आते जाएंगे वो साथ के साथ हम क्लियर करते चले जाएंगे. अब इससे आगे जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है दो फार्मूला, कोसाइन फार्मूला एंड नेपियर रूल. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. Why they are important is because these formulas are not only used in great circle but they are used in many other concepts in navigation. ये ग्रेट सर्कल सेलिंग में भी यूज होते हैं, इनको आप सेलेस्टियल नेविगेशन में भी बहुत जगह पे यूज करोगे. हैव यू हर्ड अबाउट PZX ट्राइंगल बेटा? PZX ट्राइंगल कुछ सुना सुना लग रहा है नाम? यस सर. यस सर. ओके, सो ये जो PZX ट्राइंगल है, यू विल बी डूइंग दिस इन सेलेस्टियल नेविगेशन. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही कोसाइन फॉर्मूला और नेपियर रूल यूज होंगे. आपने साइड सॉल्विंग मेथड्स भी सुने हैं, मरपास, लॉन्ग बाय क्रोन, इंटरसेप्ट, एक्स मेरिडियन, किए हैं इन पे क्वेश्चन प्रीसी में? यस सर. राइट. इनके भी जो फॉर्मूला है, जैसे लॉन्ग बाय क्रोन का फॉर्मूला है ना, कॉस ऑफ पी साइन ऑफ ट्रू अल्टीट्यूड माइनस प्लस साइन लेट साइन डेक्स सो एंड सो ऑन सो ऑन, ये सारे फॉर्मूले भी एक्चुअली कोसाइन फॉर्मूला से ही डिराइव्ड हैं. सो अगर आप इन फॉर्मूलाज को समझ गए तो आपके माइंड में ग्रेट सर्कल सेलिंग के साथ साथ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और भी जहां यूज होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन में, रैशनल होराइजन डायग्राम में, PZX ट्राइंगल में, वो सारे कॉन्सेप्ट उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे. सो लेट अस गो इनटू कोसाइन फॉर्मूला and then we follow it with Napier's rules. ये दोनों चीजें प्रीसी में भी की होंगी बेटा, कुछ कुछ याद आ रहे हैं नाम दोनों के? यस सर. Okay, good. So let's go into these formulas. Just give me a minute, I will share the presentation.
So just to recap, beta, I have told you about a great circle and a small circle. Great circle is a circle. Center is the same as the center of the sphere, or whose plane passes through the center of the sphere. And a small circle is the one whose center is different from the center of a sphere. So then we come to what is a spherical triangle. A spherical triangle is a triangle on the surface of a sphere, all three sides of which are parts of great circle. Now, when we have a spherical triangle, there are some formulas which we use to solve that triangle. So let us see those formulas one by one. The first one is cosine formula. Just give me 1 minute, I'll be back. Okay. So beta, the first formula which we use to solve the spherical triangle is the cosine formula. Now, what do we first understand or mean by solving the spherical triangle? Now you see, this spherical triangle has 6 parts. There are 3 sides and there are 3 angles. The difference between a normal triangle or a plane triangle and a spherical triangle is that in plane triangle, the sides are measured in the units of length. Whereas in a spherical triangle, the sides are also measured in units of angle. The angles are obviously measured in angular units, that is degree, minute, and second. The sides of a spherical triangle are also measured in angular units. बेटा ये चीज आपको समझ में आई? In a spherical triangle, the sides are also measured in units of angle. अगर आप कोई प्लेन ट्रायंगल लेते हो तो प्लेन ट्रायंगल में आप देखो उसकी जो साइड्स हैं उनको हम लेंथ के यूनिट में मेजर करते हैं. आइदर वी मेजर इट इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स और मीटर्स. जो एंगल्स हैं उनको हम एंगुलर यूनिट में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में. पर जो स्फेरिकल ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल में एंगल को और साइड को दोनों को ही एंगुलर यूनिट में मेजर किया जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड में ही मेजर किया जाता है. अब आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि किसी साइड को हम लोग एंगल में कैसे मेजर कर सकते हैं. तो बेसिकली बेटा स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में जो भी साइड आप मेजर कर रहे हो, लेट अस से जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो ए बी साइड हमें दिख रही है, हमें इसे मेजर करना है. तो कैसे मेजर करते हैं? एंगल में ही मेजर करते हैं. और ये एंगल कौन सा होता है? अगर हम ए पॉइंट को स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन कर दें, इसी तरह से बी पॉइंट को स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन कर दें और उन दोनों के बीच में सेंटर पे जो एंगल बने, that is the angle which is taken as the length of this side. So bottom line is spherical triangle में side और angle दोनों को ही डिग्री, मिनट और सेकंड या डिग्री, मिनट और डेसिमल ऑफ ए मिनट में मेजर किया जाता है. सो बेटा ये सबको चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर. ओके, very good. So that is the difference between a plane triangle and a spherical triangle. Now solving the spherical triangle means that
out of these 6 parts, if some of the parts are known to us, let us say I know all the 3 sides, then using these formulas, I can calculate the unknown parts of the triangle. So in this case, if 3 sides are known to us, the unknown parts are the 3 angles. By using these formulas, we can calculate the angles. So that is what we mean by solving a spherical triangle. So how do we do it? The first formula is the cosine formula. So what is this cosine formula? You can see this on the screen right now. Cos of any angle in this triangle is equal to cos of opposite side minus cos of adjacent side 1 multiplied by cos of adjacent side 2 whole divided by sine of adjacent side 1 sine of adjacent side 2. So how do we understand this formula? What is opposite side? What is adjacent side? Now for this, you have to assume any one angle in this triangle. So can you tell me, Papa Alpha Bravo, which angle you want to take? Alpha. Okay, so let's take angle alpha. Now, if you see in this triangle, there are 2 sides which are making this angle or which are involved in making this angle. That is side PA and side AB. These both sides form part of this angle A. These are known as adjacent side. And you see there is one side which is not connected with angle A at all. And that is side PB, this one. So the side which is not connected to the angle is known as opposite side. So if I use this formula for angle A of the triangle, it would be cos of angle A, angle A is any one angle of this triangle, is equal to cos of opposite side. So for opposite side, we will have PB minus cos of adjacent side A, adjacent side 1, that is PA, into cos of adjacent side 2, that is AP or PA, divided by sine of adjacent side 1, that's PA again, and sine of adjacent side 2, that is AB again. So this is how the formula is applied. ओके सो बेटा अब आप मुझे बताओ कि ये एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड ये आपको समझ में आ गई है? Yes, sir. ओके फिर एडजेसेंट साइड 1 एंड 2 तो कुछ भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि ये ए बी हो सकती है एडजेसेंट साइड में। हाँ बेटा, एडजेसेंट साइड में कोई भी पहले लगा सकते हो आप, कोई भी बाद में लगा सकते हो। अगर आप ए बी को पहले लगा दोगे, पी ए को पीछे लगा दोगे तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ओके, और कोई डाउट बेटा यहां तक? ओके, वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू देन। Now, as you can see in the formula, if we know all the 3 sides of this particular triangle, we know all the 3 sides, PA, PB, and AB. If all 3 are known to us, we can calculate any angle of this triangle. We can calculate all the angles. Okay? Because on the right side of this formula, you see there are all sides. So if all the sides are known to you, you can calculate any angle using this formula. So that's one usage of the cosine formula. The second usage is, let me explain it to you here. Let's erase the ink. Okay, the second use here is that if you know any 2 sides of this triangle, any 2 sides, okay,
You can pick up any two sides here, beta. PA, PB or AB. Any two. You can tell me. AB and AB. PAPB. Okay. So let us say this side is known to us and this side is also known to us, PA and PB. If you know any two sides of this triangle, the included angle means the angle within these two sides. So in this case, it will be angle P. Angle P is included in these two sides, PA and PB. So if you know any two sides and the included angle, again, this formula can help you find out the third side of the triangle, which is AB. So using this formula, we can very easily find what is this third side AB of the triangle. How can we do that? Apply this formula for angle P. If you apply it for angle P, so it will become cos of P is equal to cos of opposite side. Opposite side will be AB in this case, into cos of adjacent side 1, that's PA, into cos of adjacent side 2, that is BP, sine of adjacent side 1, PA, and sine of adjacent side 2, BP. ओके सो बेटा अब आपने देखा कि अगर हमें इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स पता हो और इंक्लूडेड एंगल पता हो तो भी हम ये कोसाइन फार्मूला लगा सकते हैं। सो ये हमने कोसाइन फार्मूला लगाया। लेट्स सी नाउ। Now, if you see in all these values which we have filled here, angle P is known to us, side PA known to us, PB known to us, PA known, PB known. The only unknown here is AB. So if we put all these values of angle P, value of side PA, value of side PB in this formula, we will be able to easily calculate what is side AB of this triangle. ओके सो ये भी बेटा समझ में आया। दो साइड और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल हमें पता हो तो हम कैसे तीसरी साइड का पता लगा सकते हैं यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला। सो इसमें कोई डाउट आ रहा है बेटा अभी तक? No, sir. No, sir. Okay, very good. Let's continue. So these are the two cases or two scenarios in which cosine formula can be applied or used. One, when all the three sides of the triangle are known to you. Second, when any two sides of the triangle and the included angle is known to you. What is important to note here is that if you do not have the included angle, but some other angle, let us say you don't have angle P, but you have angle A known to you. Now, in this case, cosine formula cannot be applied. So, यहाँ पे बेटा cosine formula apply नहीं होगा. So, the doubt comes into mind, what will apply here? That we are not going to do now. Absolutely. That we will see later. Okay, it will not be required in the entire great circle setting. So this is cosine formula. So beta, any doubt or query you have in this formula? लास्ट में जो आपने बताया कि किस सिचुएशन नहीं अप्लाई होगा वो एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके बेटा देखो बेटा इसे अप्लाई करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि वही दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल चाहिए। अगर आपके पास कोई और एंगल है, अब जैसे हमने इसमें साइड अज्यूम की थी PA और PB कि ये दोनों साइड हमें पता हैं। लेट अस से अगर इन दोनों के साथ जो एंगल आपको पता है वो एंगल A पता है। अब एंगल A तो इनका इंक्लूडेड एंगल नहीं है, एंगल A तो बाहर चला गया है।
तो अगर एंगल ए हमें पता है, इस केस में कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कोसाइन फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है अगर दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल हमें पता हो। राइट बेटा, अब क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, Very good. So that seems clear. As I told you, this formula is applicable in two conditions. When all three sides of the triangle are known, or when any two sides and the included angle is known. So whenever you see a spherical triangle in which these conditions apply, any one of these conditions apply, you can use the cosine formula to find out the remaining parts of the triangle. All other parts of the triangle can be found. Okay. Let's move to the next formula now, which is the Napier's rule. okay. Beta, since this is our first lecture, let me talk to you face to face. ये हमारा पहला लेक्चर है बेटा। सो कहीं भी आपको लगे कि ओवरलोड हो रहा है काम या ज़्यादा हो रहा है तो आपने मुझे बता देना है। आई विल स्टॉप देयर। ओके, वी हैव एनफ टाइम, वी कैन कवर इट अप। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाई लेवल अलार्म आ गया है ना इधर, तो इमीडिएटली बता देना है। डोंट लेट इट स्पिल ओवर, डोंट लेट द कार्गो स्पिल ओवर। समझे? ओके, सो अभी तक कंफर्टेबल है बेटा? नेपियर रूल पे चले? ये सर सर 5 मिनट रुक कर चलते हैं। हाई हाई आ रहा है अभी। हाई हाई आ रहा है? ओके ओके, तो बेटा थोड़ी सी ना अपनी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जो है अब वो बढ़ानी पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू आर फीलिंग। हाउ अबाउट अदर पीपल बेटा, अप टू हियर ओके? ओके, सो अदर पीपल ऑल सीम फाइन। तो मनदीप बेटा थोड़ी कैपेसिटी जो है ये अब बिल्डअप करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ओके यस सर, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़े बहुत बादाम खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, उससे थोड़ी सी रैम जो है ना वो बढ़ जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ROM RAM दोनों बढ़ जाएंगी। सो यू विल बी एबल टू कैप्चर। सो एनीवे, नेपियर रूल कर लेते हैं बेटा। नेपियर रूल के ना दो वेरिएंट हैं। एक है 90 डिग्री एंगल अगर हमारी ट्रायंगल में आ जाए, और दूसरा है 90 डिग्री साइड अगर हमारी ट्रायंगल में आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, वी विल जस्ट डू द नेपियर रूल, नथिंग एल्स फॉर टुडे। ओके, ओके बेटा, let me go to the presentation now. Now, Napier rule is applicable to special spherical triangles. What should be the speciality? The speciality in these triangles is 90 degrees. That means either any one angle or any one side of the triangle should be 90 degrees for us to apply the Napier's rule. So if you see a spherical triangle in which
at least any one side or any one angle is 90 degrees, Napier rule can be applied there. Now, what does Napier rule say us? Napier rule tells us that in any special spherical triangle, means having a 90-degree part, that is the speciality. If you know any two things other than the 90-degree part, 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के अगर आपको उस ट्रायंगल में कोई भी और दो चीजें पता है, it could be two sides, it could be two angles, it could be one side and one angle, कुछ भी हो सकता है ये. So any two sides of the triangle, if they are known to you, or any two parts of the triangle, if they are known to you, by using the Napier's rule, you can find everything else in that triangle. So if we apply the Napier's rule, it makes solving the spherical triangle very, very easy. Other than the 90-degree part, you need to know any two parts of the triangle and the entire triangle can be solved. Now, how do we apply this? So for applying this, we have to make a diagram. So what you do is you draw a circle, like I have drawn this blue color circle here. We have this PZX triangle, which is a special spherical triangle. You can see here that this angle Z is 90-degree angle. So it's a special spherical triangle. So when we apply the Napier's rule, we make this circular diagram. And in this circular diagram, we divide this diagram into 5 parts. Okay, so you can see these are the 5 parts in which we divide it. Now what we do is, whatever is the 90-degree part of the triangle, that is written on top here. So in this case, angle Z. Angle Z is the 90-degree part. So I write this angle Z on top. Now from this angle Z, you start to move clockwise or anti-clockwise in whichever direction you want to go. If you want, you can move clockwise. If you want, you can move anti-clockwise also. Okay. And whatever parts of the triangle, they keep on coming, you keep on filling them up in this circular diagram. So from Z, we move, we are moving anti-clockwise in the triangle. So next part which comes is small x, which is side x. So you see side x is built here in this part. Then you have angle P. You see angle P is built in this part. Now in the bottom 3 parts, that is this one, and this one, you see we write 90 minus, 90 minus, 90 minus. And whatever part is filled up, it comes after this value. After 90 minus synonym, we put the part of the triangle after this. So in number 3 part here, you see it is 90 minus P. Can you go further? The next part of the triangle which comes in is small z or side z. So you see in part number 4, it is 90 minus small z. And the next part is capital X or angle X. So you see in number 5, it is 90 minus capital X. And the next part is side P. So you see we have side P here. And once the triangle is completed, the circular diagram, all parts are also filled up. So this is how we fill up the parts. Now, as I told you, you can go clockwise, you can go anti-clockwise. If you want, you can go clockwise in one part and anti-clockwise in the other part. Like in the triangle, if you want to go anti-clockwise, it is perfectly fine. In the circle, if you want to go clockwise, it is perfectly okay. So whichever direction you move, whether you move clockwise or you move anti-clockwise, both ways,
the Napier rule application is going to be correct. So bottom line is that whichever way you apply this Napier's rule, you need to be really intelligent to make this wrong. So whichever combination you select, the filling up of the diagram, filling up of the circular diagram is going to be correct always. So once this diagram is filled up, after this we apply the Napier's formula. Okay. So beta, any doubt you have in filling up of the circular diagram? ओके ये क्लियर हो गया बेटा. वी कैन गो क्लॉकवाइज, वी कैन गो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों केसेस में ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. सर थोड़ा सा बाउंस हो रहा है सर, वापस से थोड़ा बता सकते हैं बेटा यू वांट मी टू रिपीट दिस? यस सर, वंस मोर. Okay, let's go to the whiteboard. I'll open up the whiteboard and show it to you there. Just give me 1 minute. I'm opening up the whiteboard. Okay, beta, I hope you can see the whiteboard here now on the screen. Okay, let me draw a triangle here now. So we can draw the same triangle here. Let's call it PZX. And let's say this angle Z is a 90-degree angle. अब हमने इस ट्राइंगल पे नेपियर रूल अप्लाई करना है. So what we saw was we make a circular diagram. इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया. So how do we do that? ये 5 पार्ट हमारे पास आ गए बेटा. अब जो भी हमारा 90 डिग्री वाला पार्ट है, इन दिस ट्राइंगल यू सी एंगल Z इज 90 डिग्रीज. हमने एंगल Z को यहाँ पे ऊपर लिख दिया. नीचे वाले जो तीनों पार्ट हैं, द बॉटम 3 पार्ट्स, इनमें हम पहले से ही लिख देते हैं बेटा 90 माइनस एंड 90 माइनस. सो अप टू हियर ओके? यस सर, ओके. ओके. अब बेटा Z से आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी. बताओ किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो बेटा? क्लॉकवाइज. सो Z से हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं. ये मैंने क्लॉकवाइज का एक एरो बना दिया. जब हम Z से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला पार्ट ट्राइंगल का कौन सा आएगा? स्मॉल p. ओके, या यू कैन से साइड ZX. इसमें मैंने स्मॉल लेटर नहीं बनाए. सो यू कैन से साइड ZX. हम यहाँ पर इस पार्ट में ZX को लिख देते हैं. ZX आ गया यहाँ पे. इससे अगला पार्ट जो आएगा दैट विल बी एंगल X.
सो इससे अगले पार्ट में चले गए, यहाँ हमने लिख दिया एंगल x। इससे अगला पार्ट जो आया वो आया px। सो हम आगे चले गए, हमने यहाँ पे लिख दिया px। विच इज द नेक्स्ट पार्ट बेटा नाउ? PZ. एंगल P। सो हमने नेक्स्ट पार्ट में एंगल P फिल कर दिया। द नेक्स्ट वन इज PZ। यहाँ हमने PZ को फिल कर दिया। ओके, अब बताओ बेटा, इसमें डाउट है अभी और इज इट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके, सो हमारी जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम fill up हो गई। Now once the diagram is filled up, we can proceed to apply the formula. So let us see how do we apply the formula. Let's go back to the presentation. Formula. There are two formulas which we apply. The first one is sine of the middle part is equal to tangent of adjacent part 1 multiplied by tangent of adjacent part 2. The second one is sine of the middle part is equal to cos of opposite part 1 multiplied by cos of opposite part 2. So what do we understand by these middle part and adjacent part? Let's understand. Now, beta, as I told you, Napier rule can be used if you know any two parts of this special spherical triangle other than the 90-degree part. So in this triangle PZX, you can pick up any two parts which are known to you other than angle Z. Angle Z is 90 degrees. So any two parts which you can pick up and tell me in this triangle PZX which are known to you. Side PX and angle X. Angle P and angle X. Okay. So angle P is known to you. What else, beta? Sir, angle X. Okay, angle X. So other than this 90-degree part, which is angle Z, let us say we know angle P and angle X. Now with these parts, we can find out anything else in this triangle. So what is the first part which you want to find out? Any one part you can tell me. Side small z. The Z, So sir. small z. Okay. So this is small z which we want to find out. So मैंने जो find out करना है उसे red color में highlight कर दिया है, and जो हमें पता है उनको green color में highlight कर दिया है. Now let's identify these parts in this circular diagram. What we want to find out is small z, and we can see this small z is here in this part. So let me mark this part as red. This is the part which we want to find out. And the parts which are known to us, one part which is known to us is angle P. So you can see here, this is where angle P is. And the next part which is known to us is angle X. This is where angle X is. So in the circular diagram, now the three parts are highlighted. One part which we want to find out is in red. The two parts which we already know are in green. अब बेटा इन तीनों में से
हमें एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है, लेकिन मिडल पार्ट कैसे बनाना है? बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो या तो उसके एडजेसेंट हो जाएं या दोनों के दोनों उसके ऑपोजिट हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट एडजेसेंट हो गया और दूसरा पार्ट ऑपोजिट हो गया। दिस शुड नॉट हैपन। आइदर बोथ शुड बी एडजेसेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट। अब एडजेसेंट और ऑपोजिट का क्या मतलब है? कोई भी पार्ट अगर आप पिक करते हो, लेट अस से आई पिक अप दिस पार्ट नंबर 3. Now two parts are sharing their boundary with this part. Number 2 part and number 4 part, ये दोनों नंबर 3 के साथ अपनी साइड्स टच कर रहे हैं, so they are known as adjacent parts. दो पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं और इसके साथ नंबर 3 के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते. That's number 1 and number 5. नंबर 1 and number 5 3 के साथ बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं, so they are known as opposite parts. तो हमें अब इन तीनों में से एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है, so that बाकी के दोनों पार्ट या तो दोनों के दोनों एडजेसेंट बन जाएं या दोनों के दोनों जो हैं ये ऑपोजिट पार्ट बन जाएं. तो which part should I pick up as my middle part? Number 4. Number 4. Very good. Number 4 has to be my middle part. Because अगर मैं नंबर 4 को मिडिल पार्ट लेता हूं तो 3 and 5 ये दोनों के दोनों इसके एडजेसेंट पार्ट बन जाते हैं. अगर मैं 3 या 5 में से किसी को अपना मिडिल पार्ट लेता हूं, लेट अस से इफ आई ट्राई टू मेक नंबर 3 एज माय मिडिल पार्ट, तो नंबर 4 तो एडजेसेंट हो जाएगा, नंबर 5 ऑपोजिट हो जाएगा. तो हमारे फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक एडजेसेंट हो और दूसरा ऑपोजिट हो. आइदर बोथ शुड बी एडजेसेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट. So number 3 cannot be taken as a middle part. Similarly, number 5 cannot be taken as a middle part. So we take number 4 as our middle part and बाकी के दोनों हैं adjacent. So we will use the adjacent formula here. It says sine of middle part, that means sine of 90 minus small z is equal to tangent adjacent part 1. One part is 90 minus x and the second part, adjacent part, is 90 minus p. So you see, if we know angle x and we know angle p, the right side of this formula is known to us. If we put these values here and put them in our calculator, we will be able to easily find out the middle part, which is 90 minus small z. एंड z पार्ट जो है, ये साइड z जो है, स्मॉल z, ये हमारे पास आ जाएगा. ओके, सो बेटा अप टू हियर कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिए लास्ट पार्ट नेमिंग करने के बाद में, जब हमको पता चल गया कि एडजेसेंट और अपोजिट पार्ट कौन से हैं, उसके बाद एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए. ओके ओके, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड शो यू. अब बेटा हमने देखा कि हमारे पास 3 पार्ट आ गए हैं. लेट्स शो देम इन ग्रीन एंड रेड. ये वाला पार्ट जो है ये भी हमें पता है, ये वाला पार्ट ये भी हमें पता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. सो अब हमने बेटा इन तीनों में से एक को मिडिल पार्ट बनाना है. मिडिल पार्ट बनाना आपको आ गया है? यस सर, आ गया. ओके, मिडिल पार्ट ऐसे बनना चाहिए कि इन तीनों में से जो बाकी के 2 पार्ट बच जाएंगे वो दोनों या तो उसके एडजेसेंट हो जाएं या दोनों के दोनों उसके ऑपोजिट हो जाएं. सो मिडिल पार्ट ऑब्वियसली मुझे ये वाले पार्ट को बनाना पड़ेगा. इसे मिडिल बनाता हूँ तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट आ जाते हैं. किसी और को अगर मिडिल बनाऊंगा तो फिर एक एडजेसेंट हो जाएगा और एक ऑपोजिट हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. अब हमने इसको मिडिल पार्ट बना लिया. अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ द मिडिल पार्ट
So let's write it down. हमारा middle part है 90 minus px. So it will be sine of 90 minus px is equal to tangent of adjacent part. So हमारा ये जो part आ गया 90 minus p आ गया into tangent of adjacent part 2. So ये हमने tangent जो है second part कर दिया है 90 minus x. ये हमारा फॉर्मूला बेटा अप्लाई हो गया. अब बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा फॉर्मूले में? आ गया सर, समझ में आ गया. ओके, वेरी गुड. So sine of middle part is equal to tangent adjacent multiplied by tangent adjacent. So this is the first formula. Okay. Okay, so beta we are at about 440 now. So let's stop today's session here. So next session में मैं दोबारा आपको जो ये नेपियर रूल है इसका एक recap करा दूंगा. So we will cover up the remaining Napier's rule in the next session. So और बेटा up to now any other doubt or query which has come in your mind related to the topic which we covered or related to anything else? No, sir. Okay. Okay. So फिर हमारा सेशन जो है बेटा यहीं एंड होता है. दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ TCN. एंड नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे, आई थिंक आई हैव ए सेशन विद यू टुमारो, राइट? टुमारो वी हैव TCN सेशन. Yes, sir. Two class. Right, beta. So tomorrow when we meet, we will continue with the Napier's rule application. Napier rule को understand करेंगे, and once these two are understood, we will be able to go into great circle sailing problems. So that is the plan for tomorrow. अब बेटा ये जो ग्रेट सर्कल एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी फिर जो प्रैक्टिस होगी, दैट प्रैक्टिस विल बी फ्रॉम योर प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक. आपके पास कैप्टन सुब्रमण्यम प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक है बेटा? सेकंड प्री-सी में आपने यूज की होगी. Yes, सर है. वेरी गुड. सो उसी बुक में ग्रेट सर्कल की एक एक्सरसाइज है. हम उसी एक्सरसाइज से फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो इफ यू डोंट हैव दैट बुक, you can arrange that book. So that is where we will practice. So अगर टाइम भी लगेगा, don't worry, I will send a WhatsApp of the exercise to you, or anyone who has that book with him, he can just share a screenshot of the exercise when we cover up the great circle sailing. So that's all for today's session beta. See you in tomorrow's session. Bye bye till then. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you beta. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Bye. Thank you, ma'am. Ma'am, you are there in their WhatsApp group. I am not included in the WhatsApp group. So can you please include me there? हाँ, यस सर. सर अरुण सर को बता दूंगी मैं, वो एडमिन है ग्रुप के, तो मैं बता दूंगी उनको, ऐड कर देंगे आपको. All right, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, ma'am. Bye bye.